Today you will learn the sound of double O. As I have told you, when we see two same letters together, then we call them double. Double, okay? Like here, there are two O, then we will call them double O. Double O. तो साउंड ऑफ डबल ओ जो है वो टू टाइप्स की होती है. एक होती है लॉन्ग साउंड और एक होती है शॉर्ट साउंड. जैसे आप हिंदी में ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा पढ़ते हो, इन द सेम वे डबल ओ हैज टू साउंड्स. तो डबल ओ की साउंड क्या है? ऊ. जब ये लॉन्ग साउंड देता है तो ऊ, और जब ये शॉर्ट साउंड देता है तो उ. जैसे हिंदी में होता है, in the same way you have to pronounce it. Okay, so I will show you some words so that sound of double O will be clear to you. First, I want to show you long sound U words. As I have told you, long sound of U means you have to pronounce it longer, like oo, oo. Okay. First, you have to see how many sounds are there. As you can see, I have put here dot and underline. So here are only two sounds. First is z, z, and second is oo. दोनों ओ को मिला के एक साउंड बनता है, that is oo. Z, oo, zoo, zoo. So what is this? Zoo. This is long sound of oo. Okay. And how many sounds are there? Dot, underline and dot. There are three sounds, and those are oo, moon, moon. क्या बन गया ये? Moon. Here are three sounds in this word. As you can see, dot, underline and dot. Three sounds. So first one is f, oo, d, food, food. तो अभी आपने कुछ लॉन्ग साउंड ओ वर्ड्स देखे. नाउ वी विल सी सम शॉर्ट ओ साउंड वर्ड्स. एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ओ को हम कैसे बोलेंगे? ओ. जैसे आप हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा पढ़ते हो, ऊ. छोटी आवाज आपको निकालनी है, ऊ. सो एज यू कैन सी इन दिस वर्ड देयर आर थ्री साउंड्स. फर्स्ट इज ब, सेकेंड इज उ, थर्ड ख, ब, उ, ख, बुक, बुक. हियर फर्स्ट साउंड इज व, देन उ, देन ड. तो क्या बन गया ये? W, O, D, wood, wood. So here you can see this double O is giving a short sound. Wood, wood, not wood. Is it wood? Let's see one more word. Here first sound is f, then O, T, foot, f, O, T, foot, foot. So you can see here double O is also giving a short sound. छोटी आवाज आ रही है ओ की. Foot, foot. So you have to remember these words because these are sight words and you listen these words in your daily life. So you have to differentiate between long sound and short sound of oo.